Hello and welcome to Proxy Gyan and welcome to this NCRT discussion series of history. Dear students, I am Chandni Mulchandani of 24 History and here today we are going to start with theme number 6. Medieval Indian history का बहुत important topic that is Bhakti and Sufi traditions. I hope your history series is going well and you are able to understand the concepts. Students, these NCRTs, history new NCRTs are very relevant for your exam because we have seen you might have witnessed that you have got questions directly from new NCRTs in your examination at prelims level, also in mains. Okay, so NCRT को छोड़ करके एग्जाम में नहीं जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए. चलिए शुरू करते हैं आज का आपका टॉपिक भक्ति सूफी ट्रेडिशंस. क्या है भक्ति सूफी ट्रेडिशन, पहले उसके बारे में बात करेंगे, फिर आपके एनसीईआरटी के कॉन्टेक्स्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे. सो स्टूडेंट्स, मिडिवल इंडियन टाइम में हमने देखा था कि जब इस्लाम इंडिया आता है और इस्लाम के फॉलोअर्स इंडिया में बढ़ रहे होते हैं, उस समय हिंदुइज्म की जो पॉपुलैरिटी कम हो रही थी या वैदिक रिलीजन की जो पॉपुलैरिटी कम हो रही थी वो इसलिए हो रही थी बिकॉज देयर वर सम प्रॉब्लम्स और सम लूप होल्स इन द रिलीजन. फॉर एग्जाम्पल, there was too much dominance of Brahmins. For example, there was too much focus on ritual sacrifices. For example, there was too much focus on idol worshipping and a number of other things which made life difficult for the people. For example, caste system. Caste system was one of the prevalent things which we have seen has become a problem for the people, especially for the Vaishyas and the Shudras. क्यों? वो समय था जब बहुत ही ज्यादा आप देख रहे थे कि हर चीज में डेवलपमेंट हो रहा था. So people wanted a change in the religion as well. In this context, in this background, various religious leaders, various saints, various religious leaders started emerging with the idea of bringing reforms to the religion. And इस पूरे आप कहिए दौर को हम भक्ति आंदोलन या भक्ति मूवमेंट के नाम से जानते हैं. जब हमने देखा कि पूरे भारतवर्ष में नॉर्थ से लेकर के साउथ तक हमें अलग अलग सेंट्स, ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक हमें अलग अलग सेंट्स भक्ति मार्ग को जो है प्रमोट करते हुए दिखे और रिलीजन में जो भी लूपहोल्स थे या जो कुछ शॉर्टकमिंग्स थी उनसे लड़ते हुए दिखे, उनको रिफाइन करते हुए अपने नए आइडियाज देते हुए दिखे. जैसे कि आई एम वेरी श्योर आपने संत कबीर का नाम सुना होगा, मीराबाई का नाम सुना होगा, गुरु नानक का नाम सुना होगा. ये सारे आपके भक्ति सेंट्स हैं. एंड स्टूडेंट्स, सूफी मूवमेंट फिर क्या है? इसी के कंटेम्प्ररी we have seen that there were Sufis. Sufis means there were the people, some say they have come from Central Asia, some say they have come from Afghanistan wala rasta, some say that they are the people who were from Kashmir, but overall they were also Sufi saints who focused on bringing reform in Islam. Okay, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं वही कुछ टेनेंट्स को अपना वर्जन दिया, जैसे कि कहा कि लव एंड अफेक्शन इज द वे टू रीच टू गॉड, to reach to Allah. And it's not like you have to do pilgrimages, you have to do sacrifices, you have to do fasting, etc., etc. You just have to have love, devotion, you just have to have bhakti in your heart and you can attain salvation. Okay, you can reach to the zenith of your spiritual journey. So all these thoughts were being promoted by the people. If it were in Hinduism, then it was bhakti movement. If in Islam, then Sufi movement. So I hope आपको movements का context clear हुआ होगा. Let's begin with the chapter. Students, the chapter says, the NCERT says, with the passage of time, many such people emerged in the society who started opposing the shortcomings of the prevailing religions and established a new path. The development of such people and the spread of their ideas was called Bhakti movement. Okay? क्या shortcomings थी? Caste system, discrimination, untouchability, sati pratha, varnashram system, and a number of other things as well. In view of all these shortcomings, many new religions, new ideologies emerged. These new religions and ideologies started criticizing the shortcomings and started showing new paths known as Bhakti movement. Okay. Now, what was the path promoted by Bhakti movement? It was the path of devotion. It was the path of devotion. It was the path of bhakti. It was the path of devotion, it was the path of bhakti, which was suggested by the people, by the saints, by the scholars to attain the Ishwar ka marg, to attain the solution, to attain the moksha. Okay. Time period 8th to 18th century we have seen, yes, long time stretch. From 8th to 18th century we have seen a number of people.
promoting these thoughts. Okay, now we will move ahead, students, and we will see that what were the various things promoted by these saints. So if we broadly divide the saints, we broadly divide the ideologies, we can come to two heads, Nirgun and Sagun. There were some saints who favored Nirgun philosophy, some favored Sagun philosophy. Sagun. Sagun. Nirgun. Without gun, without virtues, with gun, with virtues. Right? Literal meaning. Now what were these? See, निर्गुण की हम बात करते हैं. निर्गुण का मतलब all those people who believe that God is निर्गुण, without not virtues, without attributes, without form. God is formless. According to them, there is no color of God, there is no form of God. They were opposing idol worshipping, they were opposing the rituals. They were just saying that you have to meditate, you have to remember the name, you have to search God inside you. ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है, निर्गुण है वो. ठीक है, गॉड इज फॉर्मलेस. तो जब स्वरूप नहीं है तो आप कैसे उनकी चित्र बनाएंगे, कैसे मूर्तियां बनाएंगे? तो ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि आप नाम जपिए, मेडिटेट कीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए, मन में ध्यान कीजिए, सिमरन कीजिए. संत कबीर, गुरु नानक वर सपोर्टर ऑफ निर्गुण आइडियोलॉजी. सिखिज्म में नो आइडल और नो पर्सन इज बीइंग वर्शिप्ड, बट द फॉर्मलेस गॉड इज कंसिडर्ड एज द गॉड. ओके, दूसरी तरफ है सगुण फिलोसफी. सगुण मतलब गॉड एज सम फॉर्म. All those people who believed in God as a corporeal person were known as Saguns. Idol worshipping by these people was done. Mirabai, Sant Kalidas, all these were the people who supported Sagun philosophy. Mirabai भगवान कृष्ण को याद करती है, right? So Mirabai is the one who favors Sagun philosophy. So वो हिंदुइज्म का पार्ट जिसमें आइडल वर्शिपिंग होती है वो है सगुण फिलोसफी. वो हिंदुइज्म का पार्ट जिसमें आइडल वर्शिपिंग नहीं होती है, दैट इज निर्गुण फिलोसफी. ओके, नेक्स्ट, देयर आर सम पॉपुलर ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति. आपको वहां पे साइड में आपकी एनसीईआरटी में बॉक्स में दिख रहा होगा ग्रेट और स्मॉल, ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशंस, राइट? यू कैन सी 141 पेज नंबर पर इनके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं. सो स्टूडेंट्स देखिए, according to historian Robert Redfield, the two main types of traditions of devotions were prevalent in that period. One was great, another was small. Great was Vedic religion was placed in the great traditions. It was the religion which was largely followed by the upper class of the society. That is why great. Under this, everything said by the Brahmins was followed and the gods and goddesses were being worshipped. Okay? जो भी Brahmins ने कहा उसको follow किया जाता था great tradition. दूसरी तरफ है आपका स्मॉल ट्रेडिशन. स्मॉल ट्रेडिशन इंक्लूडेड दोज रिलीजन्स व्हिच वर फॉलोड बाय द लोअर क्लास ऑफ द सोसाइटी. फॉर एग्जांपल, लोकल देवी देवता है, ट्राइबल देवी देवता है, रीजनल देवी देवता है. अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन रॉबर्ट रेडफील्ड, in the future these two systems got mixed together and regional deities were included in the Vedic religion. example क्या है? You have seen भगवान जगन्नाथ की वर्शिपिंग, right? उड़ीसा में. So that is one of the regional deity who became mainstream. Great and small आपके जो traditions हैं, these got merged. Okay? Each region had its own regional deities which later became mainstream. तो ये दो popular traditions हैं जो आपको समझने हैं. Now we will talk of Bhakti movement. It started in 6th century. Let me mark this in your book. ये देखिए, जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ का उनकी सिस्टर सुभद्रा और बलराम के साथ पिक्चर भी बना हुआ है, राइट? ये निर्गुण सगुण सेक्ट आपके सामने दिखे हुए हैं. निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति, विद एट्रीब्यूट्स, विदाउट एट्रीब्यूट्स. अल्बर्स और नैनर्स के बारे में भी हम बात करेंगे. 6th सेंचुरी के आसपास हमने देखा दैट भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड फ्लरिशिंग, राइट? इट वाज 6th century when भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड flourishing. Now started and went till a long time. This was the period when new ideologies, traditions were emerging. Bhakti movement in India broadly can be divided into two heads for the ease of your understanding. One is Southern India and the Bhakti movement, another is rest of the India. Southern India में we have seen two parts, Alvars and Nayanars. Who were they? Students, Alvars were the people who worshipped Lord Vishnu. They were 12 in number. एंड उनके कुछ मेन सेंट्स की अगर हम बात करें तो आपके सामने लिखे हुए हैं नामलवर, तोंद्रा दिपोदी, अंडल, आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम्स रॉन्ग,
एंड प्रोनाउंसिएशन जो है वो तमिल भाषा में है, सो आई माइट नॉट बी इन अ पोजिशन टू प्रोनाउंस दिस राइट. एंड सेकेंड आपके हैं नयनर्स. नयनर्स विल बी द वन हु विल बी वर्शिपिंग लॉर्ड शिवा. ओके, हु विल बी वर्शिपिंग लॉर्ड शिवा. तो नयनर्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नयनर्स विल बी द वन who will be worshipping Lord Shiva. And apart from that, ये 63 थे. They were 63 in number. इनके चीफ सेंट जो है उनके उनके भी कुछ नाम दिए हुए हैं आपकी किताब में, आप मार्क कर सकते हैं. एंड द बुक कंपोज्ड बाय देम इज तवाराम. ओके, उनके द्वारा जो किताब कंपोज की गई है वो भी आप याद रखिएगा. एग्जाम में सेंट्स या बुक से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आ सकती है. सो यहाँ पर आपके जो है कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं. Let me take you to that slide. देखिए, अल्बर्ट्स द्वारा एक मेजर एंथोलॉजी जो कंपोज की गई वो है नलियर दिव्य प्रबंधनम. ओके, एंड फिर आगे बढ़ेंगे हम. विमेन डिवोटीज थी नहीं थी उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, डिस्कस करेंगे हम. एंड आई एम गिविंग यू द जिस्ट, सो दैट इज व्हाई आपको जो है कंटेंट ऐसे मिल रहा है. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पीपल हु वर्शिप लॉर्ड शिवा, इनका एक टेक्स्ट है तेवारा. ओके, जहां पे आपको तमिल शैवा हाइम्स देखने को मिलती है. लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स गेट टू द किंग एंड द सेंट का रिलेशनशिप. द रिलेशनशिप बिटवीन द किंग एंड द सेंट्स यूज्ड टू बी गुड बिकॉज वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर दिस वाज पब्लिक है तो जो है सब करना पड़ता है. किंग को पब्लिक को इम्प्रेस करना था, पब्लिक में वैलिडिटी चाहिए थी. एंड सेंट्स कौन है? सेंट्स वो है जो कि पब्लिक से obviously attached थे, पब्लिक के रिलीजन को प्रमोट कर रहे थे. These saints were actually very much liked by the common people and they had many followers. और इसीलिए we have seen the kings also had a special inclination towards them. And when the kings were supporting these saints, they were like in this mode that yes, by this we will be getting the support of the general public. During their travels, these saints declared some holy places as the abode of God, as the home of God. बाद में वहां पे बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स राजाओं ने बनवाए, जहां पे ये संतों ने कहा कि भाई ये भगवान का घर है. वहां पर बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स जो है राजाओं ने बनवाए. और ये जो प्लेसेस थी, दीज केम टू बी कंसिडर्ड एज पिलग्रिमेज साइट्स. नाउ आइडल्स ऑफ दीज सेंट्स वर आल्सो इंस्टॉल्ड इनसाइड द टेम्पल्स बाय मेनी किंग्स, सच एज फॉर एग्जांपल टेम्पल ऑफ चिदम्बरम, तांजावुर, गंगाईकोंड चोलपुरम. ये सब नाम आपने मेडिवल हिस्ट्री में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है जब मेडिवल हिस्ट्री को और डिटेल से आप पढ़ोगे तो. ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे संतों के कहने पर बड़े बड़े टेम्पल्स बने. आगे है वीर शैवाइट ट्रेडिशन. तो आपने बसवन का नाम पढ़ा होगा. दिस टॉपिक इज इन न्यूज एज वेल बिकॉज लिंगायत से बार बार डिमांड आ रही है कि उनको एक रिलीजियस कैटेगरी, अलग से रिलीजन का दर्जा दिया जाए. सो अगेन बिकम्स इंपॉर्टेंट. बसवन, ही वाज अ ब्राह्मण फ्रॉम कर्नाटका. ही स्टार्टेड न्यू मूवमेंट इन 12th century. ही वाज अ बिलीवर ऑफ जैनिज्म. बट लेटर ऑन ही स्टार्टेड ऑपोजिंग द ब्राह्मणिकल सिस्टम, और उन्होंने एक नया सिस्टम बना लिया. सोशल रिफॉर्म का काम किया. ब्राह्मणिकल सिस्टम में जो भी एडल्ट्स थे उनको क्रिटिसाइज किया, और उनके जो फॉलोअर्स थे वो वीर शैवास के नाम से जाना जाने लगे. तो दो नाम याद रखिएगा, बसवन एंड वीर शैवास. उनके फॉलोअर्स को वीर शैवास के नाम से जाना लगा. एंड इन्हें ही आप लिंगायत्स के नाम से जानते हैं, लिंग बियरर्स, राइट. लिंगायत्स के नाम से आप इन्हें जानते हैं. एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है इन दिस कम्युनिटी, men keep the linga in a small silver box and wear it on their left shoulder. ठीक है. अब लिंगायत आइडियोलॉजी क्या है? लिंगायत आइडियोलॉजी अनटचेबिलिटी में बिलीव नहीं करती, उसको अपोज करती है. री इनकारनेशन मतलब पुनर्जन्म, इसमें बिलीव नहीं करती. कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करती. डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इससे. आइडल वर्शिपिंग में बिलीव नहीं करती. लॉर्ड शिवा को डिवोशन, भक्ति मार्ग को फॉलो करने में बिलीव करती है. देयर इज अ प्लेस इन सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट. दिस इज व्हाट दे बिलीव. क्यों? क्योंकि लिंगायत पीपल ऑलरेडी हैड फेस्ड द प्रॉब्लम्स ऑफ अनटचेबिलिटी, कास्ट सिस्टम. सो दे से द प्लेस इन सोसाइटी शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट. और यहाँ पर विडो विमेन जो थी, विधवा महिलाएं, उनके लिए मैरिज पुनर्विवाह के लिए भी बहुत सारे अरेंजमेंट्स किए गए थे. एंड एक और इम्पोर्टेंट फीचर है जो कि टेस्ट सीरीज जब आप लगाओगे, बहुत सारी टेस्ट सीरीज में आपको मिलेगा, इट इज बरीड एट द फ्यूनरल. एंड पीवाईक्यूज में भी कहीं देखने को मिलेगा, दे आर बरीड एट द फ्यूनरल. मृत्यु होने के बाद हिंदू धर्म में प्रथा है कि जलाया जाता है बॉडी को, बट लिंगायत सेक्ट में उन्हें दफनाया जाता है बॉडीज को. ठीक है, तो ये एक जो है इंपॉर्टेंट आप फीचर याद रखेंगे.
और यहाँ पर आज का आपका सेशन हम खत्म करेंगे, जहां पर हमने साउथ इंडिया के वीर शैवा ट्रेडिशन, यहाँ पे पूरी डिटेल दी है, जहां पर हमने साउथ इंडिया के भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़ा। अब हम रिलीजियस फर्मेंट इन नॉर्थ इंडिया से अगले पार्ट में शुरू करेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड ऑन प्रॉक्सी ज्ञान, एंड फॉर मोर सच कंटेंट क्लासेस join our Telegram group and subscribe to our YouTube channel. Thank you so much.